आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है। बस जैसे बताऊंगा वैसे ही करिएगा। एक एक स्टेप एग्जैक्टली सेम फॉलो करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपका टेस्ट है लिसनिंग का, आपका टेस्ट है इंफॉर्मेशन को मेमोरी में रिटेन करने का। आपके कम से कम 7 बैंड या इवन 9 बैंड आ जाएं, आपको एक अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और वो है इंफॉर्मेशन को रिटेन करने की, कि कितनी देर तक आप जो सुनते हो उसको समझते हो और अपने दिमाग में रख पाते हो। एमसीक्यूज या डिफ़िकल्ट सेक्शन 3 या 4 जो अगर हम कहें, वो उन्हीं बच्चों का ज़्यादा सही होता है जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन सुनते हैं, अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को समझते हैं, रिटेन कर पाते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट के जैसे ही कुछ सुना, जो वर्ड सुन गया बस उसी को आंसर लगा दिया। आपकी इसी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैं एक्सरसाइज लेके आया हूँ गाइस। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको आज जो डिस्कस होंगे 5-6 क्वेश्चन वो दिखाऊंगा। अच्छे से उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आएंगे। जो एक्सरसाइज मैंने अपने गोल्डन टिप में आपके साथ शेयर की थी, वो आपके सामने एक ट्रांसक्रिप्ट चलेगी, आप सुनेंगे भी और पढ़ भी पाएंगे। एज सेड, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब मैंने चीज़ें कही थी आपकी इम्प्रूव हों। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि साथ साथ जब आप सुन रहे हो अच्छे से इनको समझिए और इस तरह से समझिए कि आपको एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो होगा क्या, जब ये ऑडियो स्क्रिप्ट बंद हो जाएगी, ये ट्रांसक्रिप्ट आपकी आंखों से डिसअपियर हो जाएगी, तो वापस से वही 5-6 क्वेश्चन जो पहले आपको नज़र आएंगे वो फिर से अपीयर होंगे और इस बार आपको ऑडियो को सुने बिना इन आंसर्स को फटाफट फिल करना है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा करेक्ट आंसर्स और मुझे कमेंट सेक्शन में ऑनेस्टली बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक रहे, मतलब आप कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर पाए अपने दिमाग में। वो श्योर होगा, वो किससे जस्टिफाई होगा कि अगर तो आपने एक या एक से भी कम किया मतलब बिल्कुल भी नहीं रख पाए, और अगर आपके सारे के सारे ठीक गए दैट मीन्स यू आर सुपर्ब। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ये एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हेल्प मी टू ग्रो मोर, प्रेस द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यूली अपलोडेड वीडियो एंड नेवर माइंड टू शेयर my latest video link with your friends as well and recommending them to subscribe my channel as well. I'm going to report on a case study of a program which has been set up to help rural populations in Mozambique, a largely agricultural country in Southeast Africa. The program worked with 3 communities in Chikwalakwala district near the Limpopo River. This is a dry and arid region with unpredictable rainfall. Because of this, people in the area were unable to support themselves through agriculture, and instead they used the forest as a means of providing themselves with an income, mainly by selling charcoal. However, this was not a sustainable way of living in the long term, as they were rapidly using up this resource. To support agriculture in this dry region, the program focused primarily on making use of existing water resources from the Limpopo River by setting up systems of irrigation, which would provide a dependable water supply for crops and animals. The program worked closely with the district government
in order to find the best way of implementing this. The region already had one farmers' association, and it was decided to set up 2 more of these. These associations planned and carried out activities including water management, livestock breeding, and agriculture. And it was notable that in general, women formed the majority of the workforce. It was decided that in order to keep the crops safe from animals, both wild and domestic, special areas should be fenced off where the crops could be grown. The community was responsible for creating these fences, but the program provided the necessary wire for making them. Once the area had been fenced off, it could be cultivated. The land was dug so that vegetables and cereals appropriate to the climate could be grown, and the program provided the necessary seeds for this. The program also provided pumps so that water could be brought from the river in pipes to the fields. However, the labour was all provided by local people, and they also provided and put up the posts that supported the fences around the fields.